Welcome back to Chasing the Target. काफी लेट हो गया लेकिन just few more hours away from the first test between Australia and Pakistan at the big ground, Waka ground, Perth, also known as the Octus Stadium. बहुत ज़बरदस्त मैच रहने वाला है. ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेस्ट रहने वाला है, पर्टिकुलरली शान मसूद जो नए नए कैप्टन बने हैं अभी. बाबर आजम कैप्टनसी छोड़े बाद ऑब्वियसली गोना बी अ फर्स्ट न्यू कैप्टन इन दैट ग्रीन एंड येलो कैप वेयरिंग द स्टार पाकिस्तान के लिए. तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी. दोनों ने अपने 11 आई थिंक बता चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया की मोडली सिमिलर काइंड ऑफ टीम है जो हम थ्रू आउट द ईयर देख चुके हैं, एशेज में भी देख चुके हैं, बॉर्डर गवास्कर में भी देख चुके हैं. आई थिंक 9 out of 10 players out of the 11 are going to be very similar in nature, so it's going to be not a very big challenge for them in terms of team chemistry, जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं. But I think a lot of people will be tired, a lot of people will be exhausted because काफी क्रिकेट खेली हुई है. ये सेम के सेम 11. आप डेविड वार्नर को ले लो, पैट कमिंस को ले लो, हेजलवुड, स्टार्क, these guys must be a little exhausted. क्या वही 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 चीज बार बार वही वही काम कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे. डेफिनेटली आपकी जॉब है, बट कहीं ना कहीं आप बोर तो नहीं बोल सकते लेकिन एग्जॉस्टेड हो जाते. जितने भी आपको अपनी जॉब पसंद, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि भाई आई नीड अ ब्रेक. They did get a good break. I think no, 19 November was what a lot of these players was the last time they played around, particularly David Warner, Travis Head, and all of these guys. It's been a good break for them, almost a month or maybe just a week lesser than a month. So not a decent enough break, but again, थोड़ा बहुत जितने amount of cricket Australia खेली है in the last year or so, in or this particular year particularly, आप देख लो, they went to India, they went to India, they played in they played against South Africa at home. फिर एशेज का सीरीज इंग्लैंड में खेले, फिर वर्ल्ड कप. सो यस, बैक टू बैक क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया ने, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द सेम थिंग्स. Yeah, I think it's going to be interesting to see. Ibrahim bhai, thank you for joining us. And कल अपना भी T20 है. A lot of cricket on the cards. India women versus England women's first test in Mumbai after 2014. So I think 9 years के बाद एक टेस्ट होने वाला है इंडिया में. So that's going to be a little bit exciting to see. But yeah, particularly I am a little bit waiting to see these new debutants, just like you mentioned, Amir Jamal and Khurram Shahzad. It's going to be fun to see. And क्या डेब्यू है भाई, पर्थ में सीधा घुसे तो कैसे रॉयल रंबल में घुस गए एंट्री नंबर 30 लेके. इट्स गोना बी अ वेरी हार्ड बैटल फॉर देम. नाउ आई हैव नॉट सीन देम एवर play. Obviously they're on debut. Even in I'm particularly not familiar with their records in what they've done in the Qaeda Azam or in the first class cricket that they've played back home. So it will be probably a test for even Australia, because when you don't know these players, when you don't know कि कैसा इनका अदालत है, जितना भी आप स्टडी कर लो, ऑब्वियसली फेसिंग देम विल बी अल्टीमेट चैलेंज. It's going to be fun to see कि भाई क्या करने वाले हैं against these two bowlers in particular. But obviously Australia at home is a different level. They've been fantastic in at home. Australia, South Africa ke against be, it's just been South Africa against, they smashed South Africa at home, they smashed England at home. I mean their home, in England's home. So Australia just alag force hai yaar. And Nathan Lyon after the calf strain, we know उन्हों कितने खतरनाक है घर में. तो नेथन लायन को भी आई थिंक 500 विकेट लेने में सिर्फ 4 विकेट बाकी हैं 500 विकेट लेने के लिए. तो आई एम प्रीटी श्योर वो भी वो चीज़ चेक कर रहे होंगे कि भाई विल ही बी एबल टू गेट टू द दैट अल्टीमेट 500 mark after I think Glenn McGrath and Shane Warne. It's going to be Nathan Lyon who reaches the 500 mark, but it's going to be fun to see. Just trying to get more and more pumped up for the series, because मजा तो आने वाला है शान मसूद के लिए. देखो आप, I'm going to say one thing कि भाई जो पाकिस्तान के फैंस है उतनी उम्मीद लगा के नको चलो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल जगह है जीतने के लिए. बट अगर जीत गए, और ये ग्राउंड पे पर्टिकुलरली और उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि आप पिच देख चुके हैं, बाउंस होने वाला है. इसैक मैकडोनल्ड जो वहाँ के क्यूरेटर हैं पिच के, उन्होंने खुद बोला है कि स्पीड बाउंस होने वाला है. हम एक्सपेक्ट करें कि ये पिच से हम जितना भी हम स्पाइस अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाउंस और स्पेस, हम करना चाहेंगे. बिकॉज जो लास्ट टेस्ट हुए थे यहाँ पे पर्थ में, उतना खासा बाउंस नहीं हुआ था, उतना इट वाज लिटिल बिट ऑन सॉफ्टर साइड. बट अब टेम्परेचर्स, द विकेट दैट देव सेट अप, पूरी टॉप ग्रीन दिख रही थी जब हम विकेट अनवेल हुआ था, जब फोटो निकले थे. बट आई थिंक अभी थोड़ी घास कटी है. आज सुबह भी आई थिंक घास कटी थी. क्रिकेट इन्फो पे एक इंटरव्यू आया था जहाँ पे वो लोग क्यूरेटर से बात कर रहे थे, उन्होंने बोले थोड़ा ऊपर का टॉप निकालने वाले हैं. बट अगेन इट्स गोना बी रेडी एंड रिपिंग टू रोर. अमन भाई, गुड टू सी यू भाई. मुझे समझ नहीं आ रहा आता सरफराज की इंक्लूजन, मतलब वो बंदा एक मैच में 3 कैच मिस कर रहा है. देन इमाम से क्या लेना चाह रहे हैं, वो पीएसएल में अनसोल्ड है. बिल्कुल, आई मीन
देखिए, ये ध्यान रखिए आप कि जिस तरीके से पाकिस्तान का एग्ज़िट वर्ल्ड कप से हुआ था, उसके बाद बैक टू बैक कंट्रोवर्सी आती गई। कैप्टन कोई समझ में नहीं आ रहा था उनको, इट वाज़ बिटवीन शाहीन, इट वाज़ बिटवीन शान मसूद एंड आई थिंक 1 और 2 अदर, आई थिंक इट वाज़ इवन अंडर व्हाट्स हिज़ नेम, अपने सरफी भाई के भी नाम उछला गया था, सरफराज अहमद का भी नाम उछला गया था। सो काफ़ी कन्फ्यूजन और chaos में ये टीम बनी है, तो आप वो ध्यान में रखिए कि इट्स नॉट गोना बी द ईज़ीएस्ट टू पुट अप a team particularly after the World Cup exit, right? So I think and एकदम से आप दिसंबर में आ रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, एक्सपीरियंस को तो आप लेके जाओगे, आई थिंक वो हिसाब से आई थिंक दे जस्ट ट्राइंग टू बैक व्हाटएवर एक्सपीरियंस दे हैव। रिजवान भी हैं वहाँ पे, आई नो आप पर्टिकुलरली रिजवान हैज बीन डिसेंट फॉर्म में, बट सरफराज अहमद, अगर आप होम की सीरीज देखो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अच्छा ही खेल लेते, इट वाजंट अ बैड, आई थिंक उन्होंने ही आई थिंक 50 मार के थोड़ा बहुत होल्ड करा था, तो यस, काफ़ी आवाम के पास से भी आवाज़ आ रही थी यार कि भाई सरफ़ी भाई को वापस लाओ, सरफ़राज़ अहमद को वापस लाओ। सो आई थिंक पीसीबी जस्ट वांट्स टू मेक एवरीथिंग श्योर कि भाई अभी जितनी आवाम की आवाज़ है हम उसे सुन लें, रादर देन इनको दे के, अगर रिजवान को दे देंगे, भाई रिजवान का बल्ला नहीं चल रहा था टेस्ट में, आप रिजवान को दे दिए, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विल कम अराउंड दोस थिंग। नाउ पर्टिकुलरली आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि भाई बाबर आजम कैसे करेंगे, अब जो उनके ऊपर प्रेशर हट चुका है कैप्टनसी का, 4000 रन मारने के लिए आई थिंक उनको थोड़े बहुत रन चाहिए। So it's gonna be good, milestone for him कि भाई 4000 runs achieve कर सकें, but a lot of expectation from him, even from people outside of Pakistan like me, I think, and Mustafa bhai, like we want to see this guy coming back in form, batting without a hassle के भाई दिमाग में कैप्टनसी है, फील्ड एडजस्टमेंट्स है, ये दोस्ती यारी के जो ताने होते, हजार चीज़ें होते जब आप कैप्टन होते, तो आई थिंक आई एम बैकिंग बाबर। ऑब्वियसली कैनबरा में आज प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए वो, एंड पर्थ की जो विकेट है, बट अगर पर्थ पे मार के गए तो इट विल बी अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम अलोन एंड द टीम एज वेल, बट हिम एज वेल ऑन अ पर्सनल लेवल विल बी गुड फॉर हिम टू गेट सम रन अंडर बेल्ट। टॉस जीत के आई थिंक बॉलिंग ही करेगा ऑस्ट्रेलिया, जो भी दे विल ट्राइंग टू गेट बॉल। अनदर पर्सन आई थिंक, अमान भाई आप भी बोल सकते हैं हमारे को, भाई शाहीन के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि भाई शाहीन हैज़ नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स रिसेंटली। आप देखिए उसकी इंजरी के बाद से he has not been able to reach 140 145 consistently, 130 डालता है, 138 137 ही डालता है मोस्टली। स्विंग में जो स्टिंग रहता था उनका, जो एक स्विंग बॉलर या पावर प्ले में जो ओडीआईज में देखते थे हम, वो खतरनाक शाहीन नहीं दिख के आया इन द रिसेंट टाइम्स। हाँ, विकेट टेकिंग एबिलिटी बिल्कुल है, कोई उसको डाउट नहीं कर रहे, बट जो तरीके से उनकी बॉलिंग लगनी चाहिए इंग्लिश विकेट्स पे, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे, आई होप ही टर्न्स आउट लाइक दैट। इट बी इंटरेस्टिंग टू सी हिज बैटल अगेंस्ट डेविड वार्नर। काफ़ी ओकेजन पे आई थिंक लैबुशेन को, डेविड वार्नर को टक्कर दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने, बट शाहीन के रिसेंट टाइम में आप देखिए ही इज़ नॉट बीन द ग्रेटेस्ट विद द रेड बॉल एंड द वाइट बॉल एज वेल। उनकी जो खतरनाक डरावनी एक्शन है और हाइट एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, वो एडवांटेज है, कुछ रिसेंट टाइम में नहीं आ रहा है। आई थिंक उनको काफ़ी वर्क एक्स्ट्रा दे चुके हैं, बैक टू बैक एशिया कप भी खिला दिया, नसीम को भी इंजर करा दिया, तो ये और रीजन है कि भाई आप पाकिस्तान की टीम को देख सकते हो कि भाई एक कट पेस्ट कॉपी में निकाल के 11-15 की स्क्वाड भिजवा दिया है। अभी कल आपके जो प्राइम बॉलर्स है वो तो अभी इंजर्ड हैं। वहाँ पे आपके हारिस रऊफ को भी आप याद रखिए, शोल्डर इंजरी हो गई थी एशिया कप में, तो a lot of things are not going right in terms of workload management. Ibrahim Baisal, good day for India. As Krishna wrapped up essay tail quickly, and then India A scored 377 for 6. And yeah, it was a very good day for India. And it is going to be a good, matchup. के कैसा जाते हैं, they go into the next day tomorrow, continuing with the same hopefully. But for India versus South Africa senior side, it is the last T20 at Johannesburg. So I'm pretty sure India will definitely want to end on a good note कि भाई 1-1 तो भी कर दें, क्योंकि फर्स्ट मैच तो डर्बन पे वॉश आउट हो गया था, सेकंड साउथ अफ्रीका मर्डर कर दी थी, particularly Markram and Hendricks. Third T20, I don't see a lot of changes honestly. I think it'll be the same team. Rather, I don't. Maybe Ravi Bishnoi might come in or something like that might happen, but not a lot of changes in the batting department. Bowling, yes, I do see Ravi Bishnoi come in, or maybe Washington Sundar for Ravindra Jadeja. That could be also another option. But Deepak Char might not return till the ODIs. Then I don't see, maybe Mukesh for Arshdeep. That is also a possibility after Arshdeep got smashed. बहुत बुरा मारा यार उसको लास्ट T20 में। थ्री डे टेस्ट मैच, ना पाकिस्तान के पास बॉलिंग है, ना बैटिंग, कीपिंग टू यू ऑलवेज चीकी। या आई मीन दे डोंट लुक, वही बात चल रही थी जितने भी
आर्टिकल्स पढ़ा या जितने भी मैं देखा कि लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दैट पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है ये चैलेंज, बिकॉज ये टीम बहुत नई नई है। पहले तो टुगेदरनेस नहीं है अभी ये स्क्वाड में, बिकॉज फर्स्ट शान मसूद नए कैप्टन है, उसके बाद सरफराज का इंक्लूजन हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट साथ खेले नहीं है ये लोग। फिर दो आपके पास डेब्यूटेंट्स है, पर सीधा उनको हाथ आप थमा दिए पर्थ के विकेट पे। पर्थ के विकेट एक अलग तरीका है, बट दैट ऑल्सो एक एडवांटेज भी हो सकता है कि भाई जब नए बॉलर्स आते हैं दे विल वांट टू शो कि भाई हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज आप ये टीम में सस्टेन रहना चाह रहे हैं, आप टीम के यू नो इर्द गिर्द रहना चाह रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो नसीम, शाहीन और हारिस पर्टिकुलरली ये तीन बॉलर्स हैं, उनके अतराफ अलग एक अतराफ एक ऑप्शन बनाना चाह रहे हैं कि इनके अलावा भी हम हैं, तो मे बी इट विल बी अ गुड आउटिंग फॉर खुरम शहजाद, इट माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर आमर जमाल एंड अदर बॉलर ऑल्सो इन एंड अराउंड द थिंग। तो प्रूव करने का टाइम है भाई, जिसको भी ये टीम में स्टिक करने का, या जिसको भी, लेट इट बी सरफराज अहमद, लेट इट बी बाबर आजम, लेट इट बी anybody, anyone who wants to stick in this squad will definitely have to point to prove. And what a better point to prove than Perth, Australia as an opposition. So they will need to take that confidence going in. Also for South Shakil, it's a big tournament. South Shakil के ऊपर white ball में काफी सवाल उठे हुए हैं कि भाई बंदा नहीं खेल सकता, ये नहीं खेल सकता. But I think technically red ball में he is very good. Aga Salman and him usually put up a good partnership in the middle. जब kind of अगर ऊपर collapse हो जाता है तो आगा सलमान और साउथ शकील दोनों पार्टनरशिप बना के रखते हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा है. Ibn Abai says, sorry, pitches made with soil from the Waka for the first test. Yeah, that's what I was reading as well. Rizwan better option than Sarfa. Yeah, I mean he's younger, he's more agile, he's more flexible. That's right in double option. But again, I think just सरफराज का लिए बहुत लोग पीछे पड़ रहे थे कि भाई उनको कैप्टन बनाओ, उनको ये बनाओ, तो आई थिंक वो प्रेशर में आके भी आप टीम सिलेक्शन में सरफराज को आप रखे. Rizwan scored 50 not out against Sri Lanka when he came on as a concussion stop for Sarfaraz, and he kept wicket well. Yeah, that was, I remember as well. That happened in July or August. Yeah, and it was good, and that's what Sarfaraz could stay back करे, because he even played decently against New Zealand in the Test series in Pakistan as well, right? So I think he's been there in the team, and he knows a lot of players. A lot of players respect him as well, listen to him as well. So it'll be a helpful hand for Shan Masood as well, and Babar Azam. Their exclusion will also help Shan Masood कि भाई फील्ड प्लेसमेंट्स रहने दो, ये रहने दो, तो आपके पास जब सरफराज रहते या बाबर आजम एक्स्ट्रा हेल्प रहती, तो यू कैन डिस्कस एंड एनालाइज द गेम बेटर कि भाई क्या करना है. बट वही है कि टॉल चीज़ कि अगर बॉलिंग कर लिया ऑस्ट्रेलिया, इमाम उल हक very doubtful like he's going to do anything. Normal flat wicket पे ही struggling, so in a wicket where जहाँ पे bounce है, pace है और carry है, क्या करेंगे, body blows ले सकता नहीं ले सकता, जब आपको बॉल पड़ेगा तो आपकी फटेगी या आप खड़ के मारेंगे, तो those are other things that you'll have to see with Imam. I don't see that. I mean, Abdullah Shafiq is a good prospect. काफ़ी मज़ा आता है उनको क्रिकेट खेलते हुए देखने. On occasion in test cricket उन्होंने perform कर चुके हैं. You have seen him hit a couple of important 50s, a century as well on debut. तो that will be one interesting thing. शान मसूद कैसे रिस्पॉन्ड करते, 159 या 200 मारे थे, 160 200 आई थिंक 200 मार के नॉट आउट रहे थे अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर 11. सो आई थिंक इट्स गोना बी फन टू सी कि भाई कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बाबर विदाउट प्रेशर. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि भाई बाबर बिना कैप्टनसी का टेंशन कैसा परफॉर्म करेगा. यू गॉट फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर, बट आई थिंक उनको बॉलर ही कंसिडर करूंगा. बैटिंग रिसेंट टाइम्स में ग्रेटेस्ट नहीं रहा है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं फहीम अशरफ, WPL कह रहा हूँ, बिग बैश लीग खेल चुके हैं वो. ही नोज हिज वे अराउंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल, काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो पिचेस का नॉलेज अच्छा है उनको कि भाई कहाँ से है. बट अगेन शाहीन हैज़ टू लीड द बॉलिंग अटैक इफ पाकिस्तान वांट टू गेट एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस मैच जो मुश्किल है, बिकॉज नेथन लाइन जैसे स्पिनर है वो भी ये कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त डालते हैं. ही इज गॉट अ लॉट ऑफ विकेट्स इन पर्थ एंड ही इज़ वेल नोन फॉर हिज बॉलिंग. दो उनकी कोई पेस वेस नहीं है, विकेट टू विकेट डालते हैं, बट ही इज़ जस्ट फैंटास्टिक इन ऑस्ट्रेलिया. वो अलग लेवल पे बॉलर चले आते हैं, तो नेथन लाइन को भी देखना पड़ेगा. बट आई थिंक शाहीन विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, पर्टिकुलरली जब आपके साथ दो डेब्यूटेंट्स है, नए बॉलर्स हैं, उनको लेके चलना ज़रूरी है. तो इट बी इम्पोर्टेंट कि भाई क्या क्या डिसीजंस लेते हैं शान मसूद. विल ही टेक हेल्प फ्रॉम बाबर, विल ही टेक हेल्प फ्रॉम सरफराज ड्यूरिंग फील्ड चेंजेस या बॉलिंग चेंजेस, विल ही sort of consult the other two former captains, which is a possibility because उनको है एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कैप्टनसी का शान मसूद को. बट अगेन इल बी इंटरेस्टिंग टू सी के कैसा है. बट इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान. 95 से यहाँ पे आप नहीं जीत पाए टेस्ट सीरीज. इट इज़ अ वेरी बिग रिमार्क.
अरे शुभदीप दा आ गए, क्या बात है। हेलो सर, हाउ आर यू? पिच रिपोर्ट बोल दिया सर। बाउंसी विकेट रहने वाली है। इट्स गोना बी अ सॉसी स्पाइसी अफेयर। जब आपके पास हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस है, इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती आपके पास। पिच रिपोर्ट यही बोल रहा है कि भाई बाउंसी विकेट रहने वाले, टॉप फुल ग्रीन है, घास ही घास भरी हुई है, एंड इट्स गोना बी डे वेयर प्रॉब्ली आपको इंजरीज देखने को मिल सकते हैं। और अच्छा खासा रेस्ट मिला है कि ये तीनों बॉलर को ऑस्ट्रेलिया के एक महीने से थोड़ा कम अगर आप लो। 19 नवंबर वाज देयर लास्ट डे ऑफ क्रिकेट दे प्लेड इन इंडिया, एंड देन दे केम बैक टू ऑस्ट्रेलिया विद इन 2 to 3 days। उसके बाद से रेस्ट पे ही हैं। एंड इट्स जस्ट गोना बी फन टू सी, बट ऑल्सो अगर पाकिस्तान के बॉलर 140 45 कंसिस्टेंटली मार सकते, दे कुड गिव अ चैलेंज विद द बॉल, बट इट्स जस्ट द बैटिंग दैट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ bowling भी differential रहेंगे, but batting will also be probably some kind of need to do some kind of a help to the bowling department if they want to survive. But winning the toss, Australia will definitely want to bowl first. So will Pakistan maybe. But it's going to be interesting to see what Pakistan can do. 95 से यार यहाँ पे नहीं जीते. It's been 2 decades almost where Pakistan have not won at all. Uh, and that's what we're trying to wait for. I'm excited, but I would have been more excited probably अगर नसीम शाह रहते थे ये bowling lineup में, because उनकी debut भी यहीं हुई थी। But unfortunately नसीम भी मिस हो गए, अबरार भी I think मिस हो गए हैं for this Pakistan series. He's been also replaced I think. uh, but yeah, it's just going to be interesting to see कि दो debutants कैसे perform करने। It's a very hard exam that they'll try to pass. Yeah. Yeah, I think the match might end in a draw by Brembite for the India and South Africa A, but yeah, it's just, I think it was a phenomenal performance today. Uh, like you mentioned today, it was very very good to see कि भाई talent तो बहुत है भाई, अभी दोनों दोनों उसमें like John and all of these guys have been fantastic. And it's just going to be interesting to see कि कैसा है। प्रसिद्ध कृष्णा also bowled decently as well. Um, तो अभी देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या सीन होने वाला है विद पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। सुदीप दादा आप भी देखो भाई, पिच पिच तो सुबह 7:50 को ही मालूम होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स तो भाई जैसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। अपन पूरा एक महीना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को देखे, लेट इट बी इन द वाइट बॉल फॉर्मेट, रेड बॉल फॉर्मेट, पूरा साल देखे आप, एशेज में देखे आप, बॉर्डर गवास्कर में देखे डेविड वार्नर का लास्ट सीरीज हो सकता है, तो शायद वो अच्छा खेल जाए एज अ गुड बाय टू टेस्ट क्रिकेट में भी। उसके बाद आपके पास स्टीव स्मिथ है, आपके पास लाबुशेन है। ऑस्ट्रेलिया आपने अपनी 11 अनाउंस कर दी, आई थिंक पाकिस्तान ने भी अपनी 11 अनाउंस कर दी। तो उस्मान ख्वाजा का क्वालिटी क्या ही बयान करूं। वो प्लेयर इंडिया में इतना अच्छा खेल गया, तो ऑस्ट्रेलिया एट होम ही इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक बैट्समैन। तो डेविड वार्नर और उनकी पार्टनरशिप, हमें पता है कि स्कूल के डेज से उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर एक साथ खेल चुके हैं। उसके बाद आपके पास है लाबुशेन, जो नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन थे इन दिस ईयर, और जो फैंटास्टिक फाइनल खेला था उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट। तो लाबुशेन और स्मिथ हमें पता है लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स हैं, एकदम सिमिलर इन स्टाइल एंड द वे दे बैट। दोनों पूरा रात बैट कर सकते हैं। अब स्टीव स्मिथ के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्टीव स्मिथ कैसे खेलते हैं। उनके बारे में बोल रहे थे कि भाई आप क्रिकेट क्यों नहीं छोड़ रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो उन्होंने बोला जब तक मुझे क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है, आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग क्रिकेट till I enjoy it, and then I will see as I stop enjoying it. But for now, I'm enjoying my cricket, and but in the recent time, अगर आप देखो स्टीव स्मिथ बेस्ट बैट्समैन नहीं रह चुके। जो वो एक फियर फैक्टर रहता था स्टीव स्मिथ का, वो तो रहेगा कि भाई इफ ही स्टिक्स टू द विकेट और इफ ही स्टार्ट्स प्लेइंग काउंटर अटैकिंग, बट ही स्टॉप प्लेइंग काउंटर अटैकिंग। आई थिंक स्टीव स्मिथ का सबसे बड़ा इशू रिसेंट टाइम में ये हुआ कि वो बहुत सोच विचार करके शॉट मारने जा रहे हैं। ही इज नॉट बीइंग द स्टीव स्मिथ हु इज रिस्क टेकिंग या थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा काउंटर अटैकिंग जस्ट टू पुट द बॉलर्स अंडर प्रेशर। ही स्टॉप डूइंग दैट। तो वो एक रिसेंट टाइम में स्टीव स्मिथ की थोड़ी बहुत ड्रॉबैक हो चुका है कि भाई वो जिस तरीके से खेलते थे एक एग्रेसिव टेम्परामेंट के साथ एक बैलेंस रखते हुए, बट मेरे हिसाब से आई थिंक स्टीव स्मिथ माइट वांट द सीरीज टू बी वन वेयर ही इज द प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो यू कुड सी के स्टीव स्मिथ माइट कम बैक एंड फ्रॉम ट्रेविस हेड, fantastic WTC final 100 over there, fantastic World Cup final 100 over there. So Travis Head again can bowl as well, he can be a part-time bowler as well. Mitchell Marsh comes back. Mitchell Marsh is also a fantastic all-rounder जो ऑस्ट्रेलिया को बैलेंस देता है। उसके बाद आपके विकेट कीपर है एलेक्स कैरी, वो भी काफ़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। अगर लेट्स से नीचे रन्स की ज़रूरत है, यू कैन एक्सपेक्ट अ 50 और 70 80 फ्रॉम एलेक्स कैरी। ही इज दैट काइंड ऑफ बैट्समैन हु कैन गेट क्विक रन्स एज वेल। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन, हेजलवुड, ये 4 लोग के बारे में तो क्या ही बोलूँ, सबको ही पता है कि भाई इनकी क्वालिटी क्या है। बहुत बड़ा टेस्ट है यार पाकिस्तान के लिए। और अगर अपन पाकिस्तान की टीम कुछ तरफ जाएंगे, इमाम उल हक
आई डोंट नो व्हाट टू से मैन। इमामुल हक को काफ़ी चांसेस मिले हैं। श्रीलंका में आई थिंक उनकी लास्ट इनिंग्स अच्छी आई थी जहाँ पे 50 या 100 वन ऑफ दिस टू मारे थे, एंड वो बहुत रेंगते रेंगते मारे थे, बहुत स्लो मारे थे। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक वेरी डिसेंट बैट्समैन, बहुत अच्छी टेक्निक है उनकी, पसंद आया प्लेयर अब्दुल्ला शफीक एज एन ओपनर, बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, कर सकते हैं। फिर gets fit and if he gets a lot of runs under his belt, it'll be good for his confidence as well. Shan Masood, प्राइम मिनिस्टर 11 में जबरदस्त खेले थे, अब कंटिन्यू है। पर्थ का पिच अलग है भाई, यू कांट कंपेयर इट टू अदर पिचेस इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ वेरी हार्ड ग्राउंड टू बैट ऑन। यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंजरीज, अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी ब्लोज, तो यू हैव टू बी अल्टीमेटली मेंटली आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा एज वेल एज फिजिकली। उसके बाद बाबर आजम, देखिए बोलने को बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, अभी तक ही इज़ नॉट you know p- proved anything in big margins in Sena countries at least. So I'm waiting for Babar Azam. Now that you don't have the captaincy, how are you going to, आप कैसा परफॉर्म करेंगे, आप कैसा काउंटर अटैक करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुका है कि भाई हम काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे या एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। सो लेट्स सी कि कितना एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, कितना काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। साउथ शकील फैंटास्टिक फैंटास्टिक टेस्ट क्रिकेटर भाई, इसके बारे में he's hit double centuries in Pakistan, but again that's Pakistan, that's flatter wickets. Now it's time to prove yourself in different countries. ये chance है साउथ शकील के लिए। सरफराज अहमद फॉर्मर कैप्टन, एक्सपीरियंस गाय, कैन कम एंड स्टे ऑन द ग्राउंड एटलीस्ट, बट मेरा वही वही प्रॉब्लम है कि भाई अभी पूरा साल पाकिस्तान फ्लैटर विकेट्स पे खेला है। पाकिस्तान हैज प्लेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ एन 11, ये 11 बहुत अलग है, अनकोऑर्डिनेटेड है, अनसिंक्रोनाइज्ड है। उसके बाद कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैक होम। पाकिस्तान के बहुत सीमेंटेड पिचेस, रोड के जैसे फ्लैट विकेट्स हैं। कराची में मैक्सिमम मैचेस कराची में खेल चुके हैं, अब कराची को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, ना पर्थ से कर सकते, ना एमसीजी, ना एससीजी या कोई भी ऑस्ट्रेलियन विकेट के से कंपेयर करना नहीं कर सकते। तो इट विल बी अ वेरी बिग टेस्ट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज कंफर्ट जोन के बहुत 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 ही दूर आप एज अ बैट्समैन खेलने वाले, एज अ प्लेयर खेलने वाले हैं। क्राउड 60,000 की कैपेसिटी है, आई डोंट नो फुल हो भी सकता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बहुत ही मजा आता है टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए। तो 60,000 की कैपेसिटी जब आप फेस कर रहे हो और जब आपकी पिच बाउंसी विकेट है, फास्ट विकेट है, तो आप कैसे ही खेलेंगे। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी। सर जी, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? I'm good. I'm just talking about the Pakistan Australia day one at Perth. जितना भी Yes, पढ़ हैं, it's going to be bouncy, it's going to be fast, an ultimate test for Shan Masood as the first examination. It's going to be the main examination. yes. So the main speaking point today was the Usman Khwaja shoes. Your thoughts on that? Yeah. Have you spoken about it? I mean, it was it's unnecessary because only he didn't hint at any kind of a particular. He just said all lives are mattered, like all lives matter, and that's all that he's written on his shoe. The ICC jumped into this and just mentioned कि भाई आप कोई agenda मत डालिए, आप ये मत करिए, वो मत करिए. He just said ये free speech है, and I think free speech के हिसाब से you should be allowed to write whatever you want on your shoes or on your shirt or something. At the end of the day, you can make a statement, and ग्लोबल स्पोर्ट है, आप ग्लोबल आइकॉन है, तो ग्लोबल आइकॉन अगर कुछ मैसेज देना चाह रहा है दुनिया को, पर्टिकुलरली विद रिगार्डिंग टू लाइव्स एंड स्टफ, आई थिंक इट शुड बी अलाउड। Yeah, 100%. I think it should be allowed also. Magar, yeah, that was the main topic of today. Magar, I saw the press conferences also. Shan Masood looking confident. मतलब उसको कप्तानी क्यों दिया मेरे को समझ में आ गया. But let's see on the field what happens in terms of tactics. I mean, he spoke well and everything. But they're going with two very young fast bowlers, and in Australia that's always a risk thing. But if they can bat first, get runs on the board, you never know. These youngsters can come and show their talent also. Yeah, and that's what it is. Like for Australia, it'll be a good test to understand कि ये दो नए bowlers कौन हैं. So it'll be a kind of I won't say exactly a very big surprise factor, but you just don't know how something you've never been tested against, how they react. And ये दो जो बच्चे हैं, they probably also want to prove the point कि भाई शाहीन, नसीम, रऊफ के अलावा भी टैलेंट है पाकिस्तान में, तो वो एक टू प्रूव योर सेल्फ एक अलग एड्रेनल रहता कि भाई हम बताना चाह रहे कि हम भी हैं पाकिस्तान में, हम जैसे बॉलर्स भी, हमारे को भी मौका दो. सो मे बी ट्राइंग टू स्टैंड अप फॉर देयर whatever spot they've got now, they want to grab it with everything that they've got. बिल्कुल बिल्कुल 100%. माइक ब्रो हाई कर दो यार, वो सुदीप दादा मर जा रहे हेलो हैं वहां पे हेलो, हाउ बेचारे. आर यू सुदीप दादा? हाउ आर यू? व्हाट्स अप ब्रो? कैसे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया का वही नेथन लैन आया शायद. ही इज द ओनली Yeah. चेंज फ्रॉम देयर लास्ट टेस्ट आई थिंक, बिकॉज़ टॉड मर्फी प्लेड दैट वन. ही केम इन फॉर हिम एंड Pakistan, yeah, the bowling lineup looks a bit inexperienced, and also Sarfaraz Ahmad is the wicket keeper, so there is no Rizwan in the team. Your thoughts on that?
I mean, देखो that's what I was discussing earlier because I think हमारे अमान भाई जो थे उन्हें बोले थे कि रिजवान but वही है कि वही सरफराज hasn't done much wrong in this format. He's whatever opportunity उनको मिली है as a wicket keeper he's played fantastic. पाकिस्तान में बचाए थे एक मैच उन्होंने अगर आपको याद है 50 मार के बहुत स्लो करके वो मैच बचाए थे. Then Naseem towards the end came and drew it. I think Naseem and Abrar were the one who were batting till the end. उसके बाद आप श्रीलंका में ले लो he'll not done anything bad. Yes, he came as a concussion sub Rizwan. Rizwan batted well. Uh, but again, I think Sarfaraz experience भी है and again उनको जितना call out करे थे पूरी पाकिस्तान के अवाम and the people wanted him to be the captain and stuff. So I think just as a calm downer इनको squad में include कराए. या आई थिंक वही थोड़ा सा वो हाइप तो था बिकॉज उन्हें भी जबरदस्त उसका कायदे आजम बहुत जबरदस्त किया सरफराज का. आई थिंक Yes, हाँ काफी अच्छा. काफी रन बनाया उन्हें. बढ़िया. मेरे को मेन कंसर्न विल बी आई थिंक देयर bowling the two experienced bowlers and then Imamul Haq top of the order. I think Australia is a difficult place. Although openers can get runs, magar it'll be feisty, especially when you have the Australian fast bowlers coming at you. Stark, Hazelwood, Cummins, it will be a big challenge because उन लोग आपको with pace भी challenge करेंगे. पर्थ में extra bounce भी रहता है और उसके ऊपर थोड़ा सा the ball will swing too. We've seen Mitchell Yeah. Stark in the Ashes. We've seen him last year against South Africa as well. He's very dangerous and he's coming back into that form. I think he only had one bad home series against India. नहीं तो उन्हें जबरदस्त डालता Stark. So it will be a big Yeah. test for Imamul Haq. Yeah, again, and Indian wickets, mein aap dekho, there was nothing much for the pacemen. You saw it on both the sides. It was mostly spin driven. And aap dekho, unka Nathan Lyon wahan pe shine kara. Nathan Lyon moving, turning wicket pe itna kara to, and Perth mein he's got majority of wicket. I think he got 46 wickets or something in Perth. Fantastic bowler. Uska 500 near hai. He's going to be more pumped up for that. Calf strain ke baad return hai. But yeah, Hazelwood again. बाबर आजम को n number of times wicket ले चुका है बाबर आजम की. You've got, but the main question is how is Shaheen going to react? Shaheen has not been bowling 145 and आप point out करे थे ये I think in the Asia Cup or before the Asia Cup, very before the Asia Cup, I don't know which tournament it was, with T20 World Cup, I think 2022 if I'm not wrong. You mentioned he was not bowling at a consistent 145 length anymore. So that is one problem that Shaheen has been facing. These wickets probably require a 140, 141 consistently to get something out. Now Shaheen being the experienced out of the lot, I think a lot relies on him and his way of thinking because Pakistan usually don't get 20 wickets in their sessions in test. Yeah, और ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहना बाउंस से. आई थिंक इफ यू हिट द राइट एरियाज आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगे 100%. एंड इट्स नॉट लाइक इट्स इम्पॉसिबल प्लेस. आप देखें इंडिया हैव वन देयर एज वेल एंड अदर टीम्स हैव फाउंड इट डिफिकल्ट बट दे हैव डन स्टफ. साउथ अफ्रीका हैव डन वेल. मगर यही है कि आप एक वो एक लेंथ को अगर आप हिट करना शुरू करें, शो दैट कंसिस्टेंसी, देन यू कैन यूज बाउंसेस एज सरप्राइज डिलीवरीज एवरीथिंग एज वेल. think you don't get over excited. And of course, and one thing is, we talk about extra bounce, but Australia is also a place where bowling can become tough. एकदम से गर्मी हो जाता, hostile conditions, the crowd is against you, pitch एकदम से flat हो जाता, and then the runs are a thing. So it's important to be very consistent and be patient in Australian conditions. You have to be patient. Any news on how the pitch will be? The pitch is going to be Isaac McDonald जो वहाँ के curator है, काफी time तक वही बोले कि भाई थोड़ा बहुत they'll take out the cost from whatever was on the top, but it's going to be very bouncy. It's going to be I think थोड़ा बहुत shape off होगा grass जो बोले थे it's going to be noticeably green, but and also it's going to be bouncy. It's going to be pacey. Movement हो सकता है. You might see शुरू के session में जो, and again bowling toss जीत के आप bowling ही करोगे. So yeah, you can expect one of those typical Perth wickets. And जो फहीम अशरफ, more than him as an individual, उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो उसको रखे टीम में, because वो आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन दे देता है and it doesn't compromise your batting. तो उसका just his utility. India also strive for that kind of player जो bowling और batting करता है. I don't think फहीम अशरफ is a top all-rounder, but because he can also utility will be his experience in Australia. BBL again, WPL बोल रहा हूँ, BBL खेल के हैं वो काफी. I think Hurricane Hobart के लिए खेले थे last season. तो फहीम अशरफ knows these Australian pitches a bit. He knows how it can react. Again, not in the test frame of things maybe, but as a T20 also when you play on this, थोड़ा बहुत will be a little helpful for him. वो तो रहता, but like I think the main thing is that he gives that extra option with the bat and the ball. 100%. उन्हें 140 कभी-कभी डालता, कभी-कभी, but बहुत rare, yeah. But he gives you that backup option. So Fahim Ashraf doesn't get into my team, bro. Like if it wasn't for this kind of thing, that's what I was like saying. Maybe I think not
he could have improved a lot in his cricket. उसको इतने chances दिए और actually he has talent. He can bowl pretty quick. Batting भी उन्हें runs मार सकता है, लेकिन he didn't take his talent to another level. I hope this series is a game changer for him. He'll be a very key player. अगर उन्हें runs बनाए and wickets भी लिया तो Fahim Ashraf can be a key player. बिल्कुल बिल्कुल. I think mainly for Pakistan it's Babar Azam and how he's going to react without that armband captaincy pressure. I'm very interested to see that, and South Shakil because Pakistan Test cricket ke liye he's been phenomenal in Pakistan, at least to say the least. So South Shakil, Babar Azam, and for Australia again, Travis Head is back. It's going to be fun to see him how he's going to react to test conditions. Travis Head is back, and he's killing it in every format. WTC Yeah. man of the match, 50 आईपीएल में over अभी match रजिस्टर्ड है वो, आईपीएल में कितने में उठेगा वो भी देखने का है. And अगर आप देखें Travis Head, even in the Ashes, he had since then he's been in incredible form. 2 साल कौन सा Ashes? I'm not talking about this Ashes, the one before The that. The 20, one in Australia. yeah, Since then, Australia he's been 4-0 smashing it. yeah. He's been in incredible form. He's playing aggressive cricket. I think last year as well, he had a very good year of cricket. So he'll be good. And Khwaja and Warner, maybe this is the last time they open. Yeah, this is the last time they'll open this is the together. last time. Yeah, This is this the is the last time last they'll time, open and then you got together. Labuschagne as well. Yeah, And it's historic partnership. उन लोग कब से साथ खेल रहे school since they से. were Yeah, 15, yeah. yeah. So it'll be good. I think David Warner, Usman Khwaja, and for Australia it's about more of the same. They've had a great year. मतलब ये आप साल को beat नहीं कर सकते. If you're looking at it from an international cricket point of view, they've won everything. Now it's about ending the year on a high. Look to win this match, the Boxing Day Test match, and seal the series as soon as possible. And they have the assets. Batting, they bat really well. Labuschagne Smith अभी पूरा फॉर्म में. उन लोग चिकट अगर टिक गए तो पूरा सीरीज चले आ सकता है आपके हाथ से. तो I think Pakistan will have to set those leg side heavy fields, have some proper plans for Smith and Labuschagne. Also test them outside their off stump, because अगर इन लोग runs बनाना शुरू कर दिए, then Australia have a very good summer ahead of them. Yeah. I think in the inner circle is where the main field should lie. Slip quadrant रखना है because Shine अगर he gets to move it. You have to be very accurate in where you place the slip. How far is it from the wicket? Because वहाँ पे थोड़ा extra bounce रहेगा. एकदम से ball rise होगा, and that reverse cup might come into play. लेकिन Exactly, you have to get the distances right, and you have to be full alert in Australia. Alert, yeah. You've seen in And Gully, we know Pakistan की fielding best नहीं रही है वर्ल्ड कप में भी. you'll बहुत get बड़ा chance. शॉट आउट हुआ था. Gully, slip, इधर आप Cameron Green बहुत active Point. रहता है ये series में भी active रहेगा, but in particular in Australia, that gully slip region will be very active. So Pakistan will need to be alert and take their catches. बिल्कुल, they'll need to take their catches, and yeah, I think it's gonna be a test for Pakistan fans. I'd say कि भाई देखो अगर पाकिस्तान नहीं भी कर पाई कुछ, ये देखो नई टीम है, थोड़ा बहुत आपको पेशेंस से खेलना पड़ेगा. इवन फॉर द पाकिस्तान टीम themselves, it's a very hard ground to come and get a victory, or country rather, in Australia very hard ground to come and win and stuff. So I think आप bit by bit दो, आप एक इसमें expectations लेके मत चलो. Just take every हाँ expectations जिससे रख सकते, like a Babar you have to expect from him and stuff, but don't go over and beyond कि भाई हम जीत सकते, but even if you don't, look at the positive from the whatever you see. Just make sure you note the positive, because there are going to be a lot of mistakes. ये टीम नई है, नया कैप्टन है, तो नए बच्चे हैं, तो you can't expect maybe आप नहीं जीत पाओगे, maybe day 3 तक हो भी जाएगा game, but you don't get shocked on that is what I'm saying. मगर वही look, the reason why they change the captain everything is because they want to win. So they at all costs want to see an improvement at least, right? Like at least win a test match, if not the series. They'll want to go for it, because आप इस वजह से तो पूरे changes कर रहे हैं. आप कप्तान बदल दिया, आप आपकी bowling भी change होगी, बैटिंग में भी थोड़ा सा बदलाव है. And so I think that's the reason, is because they want to see change, they want to win. And yeah, it'll be tough, of course. Again, if they win this series, it'll be historic. Even if they win a test match, I think it'll be great for them. लेकिन देखना पड़ेगा. Like you said, I think it's going to be a tough ask. Nitin Pasi has also joined us after a very long time. Yeah, he was the prediction master, in ऑस्ट्रेलिया को predict करे थे क्या कि मैथ्स करके करे थे कि इसकी शादी इधर हुई थी, उसकी शादी उधर हुई थी. एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जीती बाद नितिन भाई वाज ऑल ओवर ट्विटर सेइंग कि मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था ये 1 साल पहले. बट उन्होंने बोले पाकिस्तान की लोअर मिडिल ऑर्डर वेरी गुड एंड आमिर जमाल ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर. बंदा जान लगा के बॉलिंग करता है, एंड ये पाक अच्छा कर सकता है, बिल्कुल अच्छा कर सकता है. बेसिक्स अगर राइट गए, एरियाज लाइन लेंथ सही रखी, दे विल बी डूइंग थिंग. बट हेजिटेशन भी होगा. डेब्यू पे 2 बच्चे हैं. ऑब्वियसली आप कायदे आजम या फर्स्ट क्लास क्रिकेट एट होम इज डिफरेंट. ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस आपको भी बेटर मालूम है नितिन भाई के, बहुत मुश्किल जगह है आके कुछ करना. बट आई बैक पाकिस्तान एज वेल टू बी एटलीस्ट
hopefully they be competitive. If not, winning, they should be competitive and give a fight at least, and not be in this temperament ke bhai haar ke ghustegi. Pressure that on okay players पे देखो David Warner, ख्वाजा, they're they're past their peak right now. Put pressure, get them out early. Smith Labushin को जल्दी लेके आओ, उन लोग पे भी create chances. जैसा आप बोले, I think fielding will be very very important. बहुत Catches लेना ज्यादा. बहुत रहेगा because I think chances will be produced. But it's about taking your chances. We've seen in the past, like even when India won, it took them a huge mountain to climb. It was बहुत मुश्किल था, वो जीते थे. Like they gave it their everything. So winning in Australia is going to be a tough ask, but this team has some positives there as well, and there is some bright talent that we can look forward to. So let's see. Yeah, also tomorrow the 30-20 I between India South Africa. Mustafa, what are your expectation? Any changes you see there? Ravi Bishnoi coming in, Jadeja going out, maybe for a Sundar, and Arshdeep, maybe Mukesh replacing. Yeah, I prefer in the T20 format give youngsters a chance. So I would like to see Washington there, and Ishan Kishan should play. Where is he? I don't know. उसको क्यों नहीं खिला रहे? Yeah, मेरे को that तो was समझ में नहीं आ रहा है. आप उसको स्क्वाड में रख के खाली बेंच पे रख रहे हो. Even in this kind of series, give him the exposure. He's such a talented player. When he's given the chance, he scored a 200. पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें मिडिल ऑर्डर में जब 4 डाउन थे, उसमें भी पार्टनरशिप लगाया था in a pressure game. तो I think ईशान किशन को खिलाना बहुत जरूरी है. I don't know where he is. Whether he wants to play top order, middle, play him anywhere. I know that he's a top order batsman in T20 cricket, मगर उसको कहीं भी खिलाओ 11 में. तो I would like to see Ishan Kishan. Yeah, Ishan Kishan would be a good pick, and he's been one of the most consistent Indian players in at least in the last 6 months, 5 months. जो भी opportunity आप उसको दिए, he's proved himself कि भाई he's capable of batting in wherever you throw him, particularly I mean in the middle order he's not done that much bad, but top order is where he actually should be. But yeah, a lot of PSL drafts as well today. आज काफी picks हुए. Amir is gone. Amir को भी pick कर लिए. Quetta, I think But, Quetta. Yeah, Gladiators picked him, and Kieran Pollard ko Karachi Kings. Karachi, Ibrahim Bhai saying, what are your thoughts on Islamabad United picking all three Shah brothers? I think they see a lot of talent there. I've seen Naseem, I've seen, I think, Ubaid or Hunain. Who was it, the one that we sent that video? I forgot who it. I think it was Hunain, if I'm not wrong. I've seen Ubaid, this guy in the Asia Cup recently, under 19 Asia Asia Cup. उन्हें तो 19, emerging, unplayable है yeah. अभी. इंडिया के खिलाफ भी जबरदस्त bowling कर रहा था उन्हें. Hmm. He's unplayable at times, man. So he's someone that I'm looking forward to seeing him. What are my thoughts? Ki, like the families reuniting in one thing. It's nice to see all three brothers playing in one team. Hmm. I mean, normally you'd like to see them split and compete against each other, but why not? It'll increase the unity. But they're very talented. Naseem Shah to bahut zabardast hai. Ubaid bhi Hunain, I haven't seen him yet, but I'll do some research on him. Yeah. But those two are the very talented bowlers, so it's going to be Yeah. exciting times to see them. Yeah. So the Yeah. family is great. Bilkul, yeah, it's good. It's like United family, Islamabad United, and yeah, it's gonna be fun. Naseem ko to bahut time ho gaya dekh ke. Last we saw him on Asia Cup, where he got sidelined because of a shoulder injury, and surgery hoke hopefully he's back. And yeah, I think I can't wait. A 7:50 सुबह Indian time match शुरू होने वाला है यहाँ पे for Pakistan Australia. Yeah. Looking very forward to it. I just hope we get to see some kind of a fight from Pakistan, not a one-sided affair. And yeah, I Understood. think. Yeah, from Babar as well, I'm expecting things like he's technically gifted, but he's not shown the best. Couple of runs away from 4,000 runs, so it's going to be fun to see him get to that milestone as well. Rohit For Sharma also India, talked after the oh, first time. That's today I saw his face like proper. He talked for the first time since the World Cup. yeah, you could see he was emotion. He was full of emotions, and he was welled up. He said कि भाई बहुत मुश्किल था मेरे initial तो मैं कहीं बाहर भी नहीं गया. Family made this whole आराम calm environment and it helped. But then I just thought ट्रैवल करा थोड़ा बहुत लोग अच्छा था कि भाई people came up with positivity to him rather than saying भाई हरा दिए क्या दिमाग लगा दिए. He was happy of the fact that people appreciated the brand of cricket India played in the World Cup. Yeah, 100%. Talk about England versus West Indies. I watched the West game Indies yesterday. smashing it, bro. They bowled really well. I know the pitch slowed down a bit in the towards the end of the first innings, but I watched that game. They bowled really well. The way they brought it back because Phil Sort and Butler got off to a flyer. Phir, the Yeah. bowlers. Azari Joseph got smashed. It was Azari Joseph or who was it? One of those guys got ripped into pieces, but then they came back really well and they restricted Azari, yeah.
they restricted England under 200. They bowled fantastically well. और फिर बैट के साथ Andre Russell is back, man. What an Yeah, innings! He absolutely smashed it. I watched the game like even with the proper. ball, Andre Russell was fantastic. Yeah. Yeah, it's good to see him in West Indies कलर्स. और अगर उन लोग ये टीम रखे, मैं कल भी बोल रहा था अपने ग्रुप पे फैज कि ये अच्छी टीम दिख रही है मेरे को. Mm. This has potential even in the T20 World Cup. This has potential. You have Hetmeyer there, Shai Hope, Andre Russell, Nicholas Roman Puran, Powell. Myers. Powell took is like he's also their captain middle order. I think they have a lot of, and who's the guy at the top? Brandon King. He's also a very good Yeah, fielder he's in the fantastic. Yeah, Brandon yeah, King's so very I good. think this team, you add Akil Hussain into the mix, they may be missing like a a Narayan kind of bowler. Like, if they can get a spinner and an extra spinner there and continue with this, especially their batting looks really good. And yeah, if Andre Russell can perform like he did yesterday consistently, then West Indies can be back and they'll be lethal in the World Cup. Yeah, particularly Myers, Puran, and Russell. These three are going to be crucial for them in the T20 World Cup. Also, अगर ये लोग तीन खेले भाई बहुत मजा आ जाता. But again, I don't know what the issue with the contracts is for Myers and Puran and Holder. But yeah, Russell तो बोला भी था. I think post match में बोला था कि once I got the call back for West Indies, I was just too excited and waiting to go. He's a And you can class see player, that. man. And it's Yeah, you crazy. can't have him out for a long time. That's why Kolkata Knight Riders always believe in this guy. Yeah, because when he's gets going, उसको रोकना बहुत मुश्किल है. Shutdown is a beast like Andre Russell, and both bat and ball के साथ match winner है. कहीं से भी जिता सकता है. And I think अभी is towards the end of his career, लेकिन ये World Cup will be maybe his last, but it will be really important. Yeah, Bilkul will be very important. I think for West Indies cricket in general, T20 is their domain of things, and they'll definitely want to show कि भाई हम अभी भी T20 champions है. And at home again अलग feeling रहती, conditions आप acclimatized रहते. So they'll definitely want to qualify. They've qualified obviously, but they also want to जो mistake करे थे qualification of the World Cup में, they'll want to make up for it in the T20 format. T20 उनका फॉर्मेट है, उन लोगों को पसंद है 20 ओवर, मतलब जस्ट स्लैम बैंग प्ले फ्री फील्डलेस क्रिकेट, इसलिए हम लोग इफेक्टिव भी रहते हैं ये फॉर्मेट में, बिकॉज इन पे कोई रोक टोक नहीं है. दे हैव द फ्री लाइसेंस टू स्मैश, एंड इफ दे लूज, बट व्हेन दे गेट गोइंग फिर उन लोगों को रोकना मुश्किल है. एंड आई थिंक their bowling, I saw an improvement in their fielding also. Like Nitin bhai said कि that might be अच्छा catch लिया. I think Brandon King भी जबरदस्त catch लिया. The overall their fielding was very good, and bowling was also the way they came back. Especially इतने runs लीक करे power play में, उसके बाद जो लेके आए वापस game को, I think बहुत जबरदस्त था. तो it's good to see West Indies playing like that. Yeah, 100%. It's always good कि भाई West Indies is one of those teams. Back in the day तो बहुत जबरदस्त थे, but अब 2020 में they're one of the most competitive teams. तो मजा आएगा ऐसे teams अगर ऐसे खेले just before the World Cup. Similarly कल इंडिया और साउथ अफ्रीका के लिए एक और चांस है कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए कि भाई क्या they can expect, किसको रख सकते, किसको निकाल सकते in for the T20 World Cup. मार्करम एंड हेंड्रिक्स लास्ट गेम स्टील कर दिए थे इंडिया से भाई. वो जो खेले भाई फर्स्ट 5 ओवर्स में, या 5 to 8 ओवर्स रादर, too much batting करते. Markram हेंड्रिक्स की ने captaincy भी अच्छी थी, the way he handled himself also with the ball, but बॉलर I think रोटेशन, या बॉलर रोटेशन जबरदस्त है उनके. उन्हें बेहतरीन करा. इंडिया बैटिंग तो बहुत ऊपर जो मारे उन लोग पावर प्ले में खतरनाक. सिराज उन लोग सब कुछ थी. अर्शदीप इज रियली अर्शदीप तो लॉस्ट इट सिंस द डे हार्दिक shouted at him, he's not recovered. Like I thought that was a joke, but it's become true. I think उसका पूरा जो था like डिप्रेशन में चले गया. He's not being able to his confidence is gone completely. Yeah, 100%. He's gone, and tomorrow is also first women's test in India after like 2014. Harmanpreet Kaur photo dal diye with the test kit, and they're ready to go. I mean, a few injuries in the England squad, but I think they'll be ripping to go. It'll be the 100th test women's England is going to play, so that's a big achievement for them as well. But for India, they've played very less games at home. Mumbai mein hai match, and it's going to be good outing for the Indian women. Hopefully we manage to win at least the test, one test, and the only test that is going to happen tomorrow, starting tomorrow. Yeah, that'll be exciting as well. I saw like them gearing up for it and everything on social media. Saw a few pictures, so that will be exciting tomorrow. Proper test match, and Yeah. let's see how they adapt to these, this format and the conditions. Nitin Pai says McCoy or Kudagesh Moti ko don't forget Mustafa ke hit maar ke catch. Yeah, Moti is good. Moti, I saw him in a test match. He got 7 or 6 wickets. I think I remember that spell. Good. He was He's a good. player. अभी उन्हें परसों भी खेला था, मैं देखा उसको, like अभी recently भी खेला, and CPL में भी देखा शायद. He's good player. Ibrahim Bhai says Mustafa, are you following SA and India A match, and also Coetzee and Jansen are not available for the third T20I.
Yeah, so I didn't watch the match, but I've been following. I think John Duplessis scored 100. Then that Paulie Paul, bro, like Pradosh Hmm. Paul for India scored like 160. Prasidh Yeah, Krishna man. took a fifer as well. It's good to see Prasidh Krishna Shardul because at a 70, bro. Like Shardul is killing it there. yeah, Shardul also played well, but Sarfaraz also got a 68. So look, I was following the score. But it's good to see Prasidh Krishna because उन्हें T20 में बहुत पिट गया, मगर he could be a useful weapon because he does have pace, he does bowl a good length. Hmm. So test matches में he can be useful. So I'm happy to see him pick up a fifer. But yeah, I'm not being able to. I didn't get any footage, visual footage, but I've been following the score. So the Polly Paul impressed me because I didn't really know too much about him. Yeah, Polly Paul and yeah, Janssen and what do you call Janssen and Koetli will not be available. Will be a big miss. I think Koetli is fantastic with the ball. Janssen, थोड़े Because they're बहुत I going think. to, I think, prepare for the test, right? They'll play Yeah. the first class game, I think, instead, Hmm. or something like that. They're going to prepare for the test matches. So you might see Bartman and Berger get their opportunity maybe. Bartman, I've seen him in SAT20. He plays in the Eastern Cape, I think. Risers. Yeah, Risers. Yeah. Yeah. So we might see them get a chance. But yeah, South Africa will be very confident going into tomorrow's match. For India, there's a lot of work to do. I just hope they don't lose so much confidence and like just say it's fine. Let the youngsters learn. They're on tour and यही है. देखो आप conditions अलग थे, ground अलग था, dimensions अलग थे, pitch भी काफी अलग है compared to where they normally play T20 in India. Yeah. So I think it's good exposure. Keep going and let's see what happens tomorrow. Yeah. Basically, I think that pretty much wraps up thing. This last few comments, आपको याद होगा कि इनके क्वालिफाई ना करने की वजह नोती एंड क्रिया इंजर्ड हो गए, मोती एंड क्रिया इंजर्ड हो गए थे. मैथ्यू पॉल ब्रेटसा, ये बंदे तीनों फॉर्मेट में कमाई अच्छे, काफी अच्छे कर गए हैं. वेरिस जाने मन मलन का थे. Yeah, where is Janeman Malan? I don't know. उन्हें तो Yeah. जबरदस्त खेल रहा था. Like नजर लगा दिया उन्हें. I don't know where he's gone, bro. Like he had a nice name also, and he was consistent. I don't know उन्हें कहाँ चले गया. I don't know if it was injury or just a drop of form, but he was a good player. Hmm. I'm But not yeah, अलग है no, ये no, not हाँ, David David Malan नहीं है. Malan हाँ, was. हाँ, yeah, I know. His actual name David is Janeman. जाने मन, क्या बात Yeah, है. that's his name. Yeah. जाने मन को ढूंढो नितिन भाई जल्दी. आपकी भी जाने मन को ढूंढो, फिर आप भी शादी करो, फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी. हाँ हाँ. तो इनोई बट को या ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है वर्ल्ड हाँ, कप एनोइच है वो, लास्ट मैथमेटिक्स करके जो बोलते crazy. He said it last year, man. वो तो मैं भी witness हूँ. That's हैं. incredible. उन्होंने मेरे को ये time last year बोला था दिसंबर में. Well, that's crazy job, man. Like we should have taken you more seriously. That was crazy prediction. टुवर्ड्स द एंड ही लाइक, अब देखो मैं कैसा ये मैथ्स कर रहा, इन्हें शादी कर रहा हूँ, इन्हें ये कर रहा हूँ, मतलब भाई Oh, अलग ही गन्नत है इसकी. yeah. But yeah, I think it's going to be fun. Couple of games tomorrow. Couple नहीं, 3-4 games है कल. For day one for India women and England women, then day one for Pakistan Australia 7:50. Be ready, and yeah, India versus South Africa 30:20 I at 7:30 India. काफी क्रिकेट कवर करने का है. Janeman Malan has been in poor form in domestic past 2 seasons. Yeah, first Argentina, then CSK, then Australia. So he's predicted the World Cup football, World Cup cricket, and the IPL. क्या बात है नितिन भाई, you are fantastic with your maths and analysis. So yeah, appreciating you. But yeah, thank you for joining us. कल फिर हम मुलाकात करेंगे after the lot of action there is going to be to wind up and review. So stay tuned everybody. करिए like, करिए subscribe, and Newcastle is 1-0, so I'm going to look forward to watching that as well. So yeah, everybody stay tuned and chase the target. Thank you so much.